Good evening, you're watching the prime time on Hornbill TV. Let's have a look at the news headlines. Former US President Barack Obama at a campaign event in Las Vegas endorsed Vice President and Democratic presidential nominee Kamala Harris and emphasized her preparedness for the presidency. Launching a sharp attack at Siddaramaiah-led Karnataka government, Union Minister and former Karnataka Chief Minister H.D. Kumaraswamy on Sunday said that the Congress in the state will not last until 2028. In a sharp criticism of the Jharkhand Mukti Morcha, Bharatiya Janata Party, Jharkhand President and party candidate from Dhanwar constituency, Babulal Marandi, accused the JMM of plundering the state's resources over the past 5 years. Twelve people were killed after a sleeper bus collided with a tempo three-wheeled auto rickshaw in Rajasthan's Jaipur district, officials confirmed on Sunday. Indonesia's former defense minister Prabowo Subianto on Sunday took the oath as the 8th president of Indonesia, along with Gibran Rakabuming, son of the former president Joko Widodo, who was elected vice president of the country. Let's have a look at the news in detail. Jaipur District Administration has demolished the house of a father-son duo involved in an alleged stabbing incident at the temple in the city. The house, allegedly built illegally inside the temple premises, was torn down using a bulldozer. The stabbing incident took place in Tehkarni Vihar area on October 17, while Prasad was being distributed at the temple complex after a Jagran. A group of people had peacefully gathered when the attack happened. Police said Additional Commissioner of Police Kunwar Rashtradeep told ANI that a Jagran and distribution of Prasad was taking place in the temple complex when a group of people had gathered to conduct the event. A family was living next to the temple, including a man named Naseeb Chaudhary, who has a previous criminal record, the official said. Naseeb Chaudhary and his son reached the event venue and attacked the people with knives and sticks, injuring 6 individuals who were then taken to the hospital. Both of them were arrested that night itself, the police official said. According to the police official, other individuals may have been involved in the attack as well, and authorities are reviewing CCTV footage to identify anyone else connected to the incident. In a sharp criticism of the Jharkhand Mukti Morcha, Bharatiya Janata Party Jharkhand President and party candidate from Dhanwar constituency, Babulal Marandi, accused the JMM of plundering the state's resources over the past 5 years. He claimed that they had spared nothing, looting sand, coal and land belonging to both Adivasis and the army. Marandi said that the election has been announced in Jharkhand and they were already working, but now everyone will intensify their efforts in their respective constituencies. He expressed confidence in forming the BJP government in Jharkhand. Such is the extent of corruption and looting in the state that even government offices have become centers of extortion, he said. People have been waiting for election day, eager for the chance to vote and change the government. अब तो घोषणा हो ही गया सर। अब सब लोग अपना अपना क्षेत्र में पहले से भी डटे हुए थे, अब फिर अब लोग काम करेगा। जो संशय की स्थिति से इनको मिलेगा अब वो क्लियर हो गया। अब सब लोग काम में अपना लग जाएंगे। आप देख रहे होंगे दफ्तर में भी आप खाली हो गए, नहीं तो फिर यहीं पर सब कार्यकर्ता पड़े हुए थे, तो अब सब लोग क्षेत्र की ओर कूच कर गए। पार्टी मजबूती के साथ चुनाव। हाँ बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है।
जेएमएम तो कह रही है सारे बोरो प्लेयर हैं, आधे से बेसी के। अरे भैया वो तो अपने पास हम ये क्या करें कि उनसे हम कोई सर्टिफिकेट तो नहीं ले रहे हैं। मतलब अब झारखंड में एक बार फिर से सत्ता की वापसी बीजेपी। बिल्कुल इस बार झारखंड में परिवर्तन होगा और बीजेपी के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनेगी। तो ठीक है वो अपना काम करे, लेकिन 5 साल ठगा है लोगों को भाई, राज्य को लूटा है। अब ठगने वाले लूटने वालों को फिर से लोग बैठाएंगे, गलती अब झारखंड की जनता नहीं करने वाली है। क्या इन लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, बालू को नहीं छोड़ा, पत्थर को नहीं छोड़ा, कोयला को नहीं छोड़ा, जमीन को नहीं छोड़ा, चाहे आदिवासी का जमीन हो चाहे सेना का जमीन हो, सब कुछ ये लोगों ने लूटा। और जो इतना लूटा हो तो फिर उसको कैसे लोग बर्दाश्त करेंगे झारखंड की जनता। इसलिए उनके पास क्या जवाब है। भ्रष्टाचार इस कदर है जो सरकारी दफ्तर भी वसूली का जरिया बन गया था। चाहे थाना हो चाहे ब्लॉक हो या अंचल हो, बिना पैसा से कोई काम होता ही नहीं था। आप किसी से भी जाके जनता से पूछ लीजिए। जब ये स्थिति होगी तो झारखंड की जनता तो इस दिन के ही वो इंतजार कर रही थी कि भाई जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, कब हम सब लोगों को वोट देने का अवसर मिलेगा ताकि सरकार को हम लोग बदल सकें। अब वो दिन आ गया। Launching a sharp attack on the Siddaramaiah-led Karnataka government, Union Minister and former Karnataka Chief Minister H.D. Kumaraswamy on Sunday said that the Congress in the state will not last until 2028. He added that the Bharatiya Janata Party does not intend to topple the state government, but rather that their own MLAs and the people are destabilizing its foundation. He expressed confidence in becoming Chief Minister again before 2028. Earlier, Kumaraswamy accused the Karnataka government of spreading misinformation about Hinduism machine tools and Kudremukh Iron and Steel Company, leading to the loss of 300 to 400 KIOCL workers' jobs due to state negligence. He stated that the government's obstinacy has forced 300 to 400 KIOCL workers onto the streets. While the government claims to create jobs for locals, it simultaneously shows neglect. The Chief Minister should convene a meeting to address these problems. Kumaraswamy added that if there are issues, he will take responsibility and write to Siddaramaiah regarding the matter. We'll be right back after a short break. कॉलेज बोले तो दोस्ती यारी, यारो संग है फ्रीडम सारी। फ्रीडम इक्वल्स टाइम ऑफ लाइफ, लाइफ माने एंजॉय राइड। एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, स्कूटर ले एक्टिवा, स्कूटर बोले तो एक्टिवा। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर है अग्रसर। स्थानीय उत्पादों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने दिया है इंटरनेशनल मार्केट। पहले संस्करण में 70,000 से अधिक खरीदारों और 3 लाख से अधिक आगंतुकों से कारोबारियों का बढ़ा है हौसला। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण का आयोजन 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। आइए इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ का हिस्सा बनकर अपने व्यवसाय को दें नई दिशा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। It doesn't take much to save a life. Practice safe behavior.
कॉलेज बोले तो दोस्ती यारी, यारों संग है फ्रीडम सारी। फ्रीडम इक्वल्स टाइम ऑफ लाइफ, लाइफ माने एंजॉय राइड। एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, स्कूटर एटले एक्टिवा, स्कूटर बोले तो एक्टिवा। Welcome back after the break. Let's have a look at more news. Brushing off the tag of the National Conference being a party of the Muslims and dynasts, Chief Minister Omar Abdullah on Saturday said that he made a Hindu Deputy Chief Minister from Jammu not only to silence the critics, but also give a message that Jammu has equal share in his government. Addressing a party workers' meeting in Jammu, he assured the people that their problems will now be heard and solved. Even before the results were announced, some people were spreading rumors that the people of Jammu would now be neglected because they did not elect an NC candidate. He assured that his government will work for everyone and will have representatives for everyone. Further said that they had no compulsion to nominate a deputy chief minister, but they made one, that too from the ruling party. This is an answer to all those who raised questions against NC as a Muslim-only party and said that their deputy chief minister is from Jammu and from the Hindu community, and he has nothing to do with his family. 2018 में लोगों की चुनी हुई हुकूमत जब चली गई तो तब से लेके आज तक लोगों ने दर-बदर की ठोकरें खाई, मुसीबतों का सामना किया, उनकी आवाज कहीं पहुंची नहीं। मायूसी, परेशानी, दुख, दर्द। लेकिन आज मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि अब आपकी सुनवाई होगी, आपकी आवाज अंधेरे में गायब नहीं होगी, आपके मुतालबे नहीं रहेंगे, आपके मुश्किलात जो हैं इंशाअल्लाह आगे जाके उन मुश्किलात को हम हल करके ही अपने आप को दोबारा लोगों के सामने पेश करेंगे। इलेक्शन के नतीजे निकले ही नहीं थे कि हमारे कुछ मेहरबान ये शोषा डालना शुरू कर गए थे कि अब जम्मू का कुछ नहीं होगा, जम्मू को नजरअंदाज किया जाएगा, जम्मू को सजा दी जाएगी कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार या कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां से चुना नहीं। और मैंने पहले दिन से कहा, मैंने कहा यह हुकूमत सबकी होगी, इसमें नुमाइंदे सबके होंगे, इसमें आवाज सबकी होगी, और हम खिदमत सिर्फ उन लोगों की नहीं करेंगे जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस या अलायंस को वोट दिए। हम अगर खिदमत करेंगे तो पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम की खिदमत करेंगे। डिप्टी सीएम बनाना कोई मजबूरी नहीं थी ना। इससे पहले भी जम्मू के डिप्टी सीएम बने हैं, लेकिन वो कोalition में मजबूरी की वजह। मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, जब वो वजीर आला बने तो कांग्रेस के साथ उनका अलायंस था, अलायंस को उन्होंने औहदे देने थे। मंगत राज शर्मा जी डिप्टी सीएम बने। जब गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू से सीएम बने, डिप्टी सीएम बनाना था, कश्मीर को डिप्टी सीएम का दर्जा मिला। जब 6 साल मेरी हुकूमत चली, वजीर आला के तौर पे मैंने जम्मू कश्मीर की खिदमत की। अलायंस की मजबूरी थी कि ताराचंद जी को हम डिप्टी सीएम बनाएं।
इस बार फिलहाल कांग्रेस ने अभी तक मिनिस्ट्री में जो है शामिल होने का जो है कोई फैसला लिया नहीं है, लेकिन हमने तब भी डिप्टी सीएम बनाया और डिप्टी सीएम भी उसी पार्टी का जिस पार्टी का सीएम। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो पिछले इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ उंगली उठा के कहते थे कि ये मुसलमानों की पार्टी है, इस पार्टी में मुसलमानों के अलावा किसी के लिए जगह नहीं। कहते थे ये कश्मीरियों की जमात है, यहां जम्मू का कोई नहीं होगा। कहते थे ये खानदानी राज वाले लोग हैं, इनको खानदान के अलावा कुछ दिखता नहीं। जब डिप्टी सीएम बनाना था, जम्मू से बनाया, हिंदू बनाया, और मेरे खानदान से उसका कोई लेना देना नहीं है। 12 people were killed after a sleeper bus collided with a tempo three-wheeled auto rickshaw in Rajasthan's Jharkhand district. Officials confirmed on Sunday. According to the police, the incident occurred on Saturday night, claiming the lives of 12 people, including children. Shiv Lahari Meena, in charge of Bari Kotwali police station, told the media that yesterday at around 11 p.m., a sleeper bus was travelling from Dholpur to Jaipur. The accident occurred near Sunipur, involving a tempo. 12 people have lost their lives in the accident, including 3 adult women, the tempo driver and several small children. Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma acknowledged the incident and directed the administration to ensure proper medical treatment for the injured. मेरा नाम सुलेमान है। क्या घटना हुई है? ये मेरे चाचा का लड़के हैं और उसकी मिसेज, उसके बच्चे शादी में से आ रहे थे, तो स्लो आ रहे थे बिल्कुल। इधर से ओवर स्पीड में स्लीपर जा रही थी गाड़ी, ऐसी टच हुई है कि 100 मीटर तक आगे तक खींच के लेके गई गाड़ी, 100 मीटर तक। इसमें हो गई तुम्हारी 12 लोगों की, एक लड़का बच्चा आगरा बत्ती है हॉस्पिटल। कितने एक ही परिवार के थे? एक परिवार के 6 थे, एक परिवार के 4 थे, एक परिवार के 2 थे। जो टेम्पो चालक है उनके परिवार वो 6 लोग थे, उसकी मिसेज, उसके 3 बच्चे, एक छोटे भैया का बच्चा। उसकी दोनों की डेथ हो गई सबकी। एक बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती है आगरा। ये है। जो बाकी लोग एक लेडीज़ थी, उसके 3 बच्चे थे, वो वहीं ख़त्म हो गए। कौन है आपके? वो रिश्तेदारी में ही लगते हैं और वो वहीं ख़त्म हो गए। एक ही एक लेडीज़ है और उसका एक बच्चा, वो वहीं ख़त्म हो गया। रात 11:30 चोरी 11 बजे की बात है। स्लीपर कोच है जो धौलपुर से अपने यहाँ पर जा रही थी, है जो जयपुर सुनीपुर के पास में है, जो एक टेम्पो का एक्सीडेंट हुआ था। जो टेम्पो मूलत है घूमट निवासी इरफान का था। इरफान अपनी बहन के यहाँ शादी थी, जिसमें बात बात करके अपने परिवार से जाता था। इसमें टोटल 12 लोगों की कैजुअल्टी थी, जिनमें 3 महिलाएं एडल्ट हैं, एक इरफान चालक है, बाकी लोग छोटे बच्चे और बच्चे। एक बच्चा साजिद नाम का घायल है, जिसका उपचार आगरा चल रहा है। Time for a short break. कॉलेज बोले तो दोस्ती यारी, यारों संग है फ्रीडम सारी। फ्रीडम इक्वल्स टाइम ऑफ लाइफ, लाइफ माने जॉय राइड। एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, स्कूटर एटले एक्टिवा, स्कूटर बोले तो एक्टिवा। To know more about HIV/AIDS, dial toll-free number 1097.
कॉलेज बोले तो दोस्ती यारी यारों संग है फ्रीडम सारी फ्रीडम इक्वल्स टाइम ऑफ लाइफ माने जॉय राइड Activa, 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 scooter એટલે Activa, स्कूटर बोले तो एक्टिवा। Welcome back after the break. Let's have a look at more news. Days after slaughtering Hamas commander Sinwar, IDF has revealed exclusive footage of the face of evil. The video features Yahya Sinwar and his family moving to some hideout moments before the hostilities of October 7. IDF spokesman Daniel Hagari stated that Sinwar had planned the massacre of October 7 for years. Each step was planned to maximize harm to Israeli Gazan civilians and to minimize harm to himself and other terrorists, he added. Sinwar always prioritized himself, his money and Hamas terrorists over the people of Gaza, Hagari said. Notably, Yahya Sinwar was eliminated during his very first encounter with the Israel Defense Forces. As many as 101 Israeli hostages have still held in Hamas's captivity in ruthless conditions since October 7. Following the surprise attack in October 2023, Israeli Prime Minister Netanyahu vowed to dismantle Hamas completely. Meanwhile, IDF spokesperson said that this is footage of Sinwar just hours before the October 7 massacre, where Sinwar was hiding his family and equipment, beds, pillows, food and water, and a television in Hamas's underground tunnel network. This was a luxury that the people of Gaza did not have, as Sinwar always prioritized himself, his money and Hamas terrorists over the people. The IDF recently confirmed that Yahya Sinwar, the leader of Hamas and the face of evil behind the October 7th massacre, was killed in Rafah. Tonight we are declassifying footage of Sinwar from just a few hours before the October 7th massacre, as well as his movements inside Gaza as he fled over the past year. Yahya Sinwar spent years planning the October 7th attack. Each step was planned to maximize harm to Israeli and Gazan civilians and to minimize harm to himself and other terrorists. See for yourselves. This is a footage of Sinwar just hours before the October 7th massacre, where Sinwar was hiding his family and equipment, including beds, pillows, food, and water, and a television. He was hiding it inside Hamas underground tunnel network. He was doing that all night alone with his family in order to keep his position classified. It was all happening in Khan Yunis. This was a luxury that the people of Gaza did not have, as Sinwar always prioritized himself, his money, and Hamas terrorists over the people of Gaza. While hiding in the tunnels of Khan Yunis, Sinwar ordered the October 7th attack to begin. After they invaded Israel, Sinwar's army of terrorists murdered families, raped women, and kidnapped men, women, children, and babies into Gaza. 101 of these hostages are still held in Gaza after a year in captivity under ruthless conditions. Throughout the war that Sinwar started, he continued to hide underneath the people of Gaza. In Khan Yunis in February, our troops found supplies meant for a long stay in Sinwar's underground hideout, including a lot of money, food, beds, documents, a shower, and a kitchen. Then IDF operations in Khan Yunis forced Sinwar to flee to Rafah. Last month, Sinwar's DNA was found on a piece of tissue
he used. A few hundred meters from a tunnel where 6 Israeli hostages were brutally executed in Tel Sultan in Rafah. Then Sinwar fled yet again. While Sinwar was running for his life and went above the ground, this was the first and last time that he encountered Israeli soldiers in a combat. Sinwar was eliminated by the IDF in Rafah last Wednesday. I want to emphasize it again. This was the first and last time he encountered Israeli soldiers, and he was eliminated. There were no hostages with Sinwar when he was eliminated. Killing Sinwar is the result of a year of operational and intelligence efforts to bring him and other Hamas leaders to justice. Sinwar has been eliminated, but our mission is not over. We will not rest until we bring all our hostages home by any means possible, and we will continue to defend the people of Israel from all threats on all of our borders. Thank you. That is all we have for now. For more news and updates, keep watching Hornbill TV.